So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know, we have already completed last topic that was linkage. तो उसके बाद जो आज का टॉपिक दैट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर अगर हम ये टर्म ले लेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम के दरमियान होता है. इट टेक्स प्लेस between chromosomes यानी क्रॉसिंग ओवर जो है क्रोमोसोम्स के दरमियान होता है. तो ये टर्म जो है द टर्म क्रॉसिंग ओवर इट वाज गिवन बाय या coined by the term was coined by Morgan and Elith Catton. And these were two scientists who coined this term. So Morgan, we know that he is called as father of experimental genetics or modern genetics, जिसने ड्रासोफिला पर बहुत सी काम की, वो हमने पढ़ लिया लिंकेज में. तो आज हम यही डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर. पहले तो मैंने बताया क्रॉसिंग ओवर इट टेक्स प्लेस बिटवीन द क्रोमोसोम्स. उसके बाद जो टर्म है ये कॉइन की मॉर्गन और एलिथ. क्रॉसिंग ओवर अगर हम डेफिनेशन लेंगे, डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो ये साथ क्रोमोसोम पाने क्रॉस ओवर करें. फॉर एग्जांपल दिस क्रोमोसोम, दिस अनदर क्रोमोसोम. तो ये क्रोमोसोम ये साथ क्रॉस ओवर करें पाने जस्ट लाइक दिस. एंड पतन शिम अलग गसन इट्स के गसन काम कर बेसन. दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस अनदर क्रोमोसोम. गो क्रॉस ओवर ये साथ गसन छो ये पार्ट आसन छो येम पार्ट योकुन तारन येम पार्ट योकुन तारन. गो अच्छे पर दिस कॉल्ड एज इंटरचेंज. ये जो स्टेप गसन छो दिस कॉल्ड एज interchange. Interchange को मतलब जो गशपाती chromosomes they are the storehouse of genetic material. So we can say here interchange of genetic material. Interchange of genetic material takes place. तो कौन दरमियान किसन हो क्रोमोसोम दरमियान मगर इंसान स्पेशली क्रोमोसोम जो सपोज क्रोमोसोम तो याद है जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा है तो उस वक्त मैंने कहा ये क्रोमोसोम इसके दो आर्म्स होते हैं, वो क्रोमैटिड कहा जाता है. these are called as chromatids. तो यहाँ अगर एक और क्रोमोसोम यहाँ ले लूँ दिस वन, वो इट टू हैज टू क्रोमैटिड्स. तो क्रॉस ओवर यमन क्रोमोसोम गड या क्या क्रोमैटिड these are called as non-sister chromatids. यानी यम क्रोमैटिड they are because they are different, so these are called as non-sister chromatids. These are called as non-sister chromatids. तो क्रॉसिंग ओवर जब यहाँ होता मैंने यहाँ आपको दिखाया, जब क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करती है तो इसका हाफ पोर्शन यहाँ पर इस क्रोमोसोम के साथ चला जाता है और इसका हाफ सेगमेंट यहाँ इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है. तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट ड्यूरिंग क्रॉस ओवर व्हाट हैपेंस, इंटरचेंज ऑफ genetic material takes place, but between two non-sister chromatids. तो यम साथ क्रोमोसोम इवन they come close in cross over करना है, the chromosomes they come together and form a pair. Those chromosomes which come close each other form a pair, they are called as homologous chromosomes. They are called as homologous chromosomes. For example, this one will come close together, it form a pair-like structure. Just like this. ये एक और क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे एक और क्रोमोसोम आ गया, they form a pair. So they have same length. So these are called as homologous chromosomes. But the chromatids of these, they are not homologous. They are called as non-sister chromatids. So that is why I am saying that interchange of genetic material, क्योंकि क्रोमोसोम्स में genetic material store होता है, यही तो interchange होता है यहाँ पे. So I can say that interchange of genetic material between two non-sister chromatids are homologous chromosomes. So this is the definition of two homologous
chromosomes. Go how we can define this? We can define crossing over. It is a process in which interchange of genetic material between two non-sister chromatids or homologous chromosomes takes place. So this is called as a definition of crossing over. There will be interchange of genetic material between two non-sister chromatids or homologous chromosomes. So this is the definition of crossing over. Now, what is the mechanism? The crossover gasan, true crossover, kaithasan ka cinnamon gasan, ka stages patch gasan. Yeah, mechanism kya? We can here write down mechanism. Mechanism of crossover. The crossover is of it takes place during cell division. It takes place during cell division. यानी हम सेल डिवाइड कर सकते तो उसी वक्त ये क्रॉसओवर होता है. तो सेल डिवीजन की हम बात करेंगे तो सेल डिवीजन ये वेरियस फेसेस में होता है कंप्लीट. वन इज कॉल्ड एज प्रोफेज, सेकंड इज कॉल्ड एज मेटाफेज, थर्ड इज कॉल्ड एज एनाफेज, and last one is called as telophase. The cell division in something given these are two types. One is called as meiosis. Meiosis में crossover नहीं होता है, बल्कि second division that is called as meiosis. तो meiosis में ही crossover होता है. तो वो meiosis is true meiosis. अगर most 11th may have read it and I don't detail this meiosis. ये meiosis is true. In meiosis chromosome number gets halved. And if some daughter cell balance, for example, here this cell, so two cells are formed. This is called as parent cell. These are called as daughter cells. Suppose it contains chromosome number 8 in parent cell. जब daughter cells बनेंगे तो chromosome half होगा यहाँ पे, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 chromosome number आएगा. तो इसको हम कहते हैं meiosis. और meiosis जो actually it takes place in 2 steps. One is called as meiosis first, other is called as meiosis second. Meiosis first, it is also called as reductional division. ये आपने पढ़ा होगा. एक्चुअली हमें क्रॉसिंग में बताना है, लेकिन जब तक ये थोड़ा सा हम क्लियर नहीं करेंगे सेल डिवीजन क्या होता है तो हमें क्लियर नहीं हो जाएगा. तो meiosis first is called as reductional division. इसी meiosis first में क्रॉसओवर होता है. तो meiosis first के साथ नियम चीज suppose it is meiosis first M1 meiosis first. After further stages, one is called as prophase first, second is called as metaphase first, then it is anaphase first, then the last is called as telophase first. So these are 4 stages in which this meiosis first is completed. So first is called as prophase first, second is called as metaphase, anaphase. Pro means first. यानी जब सेल डिवीजन जब होता है इस meiosis में तो फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज. बट प्रोफेज इन meiosis इट इज ऑफ longer duration or it takes more time. It's long phase it takes more time to get completed. Thus it is further divided into substages. Prophase first or meiosis first has been further divided into substages. One is called as leptotene. जब तक ये हमें क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हमें क्रॉसओवर हम नहीं सीख पाएंगे क्या होता है. लेप्टोटीन फर्स्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज जाइगोटीन, देन पैस्टीन, देन देयर इज डिप्लोटीन, देन डायकाइनेसिस. वो ये these are the 5 sub stages which through which this prophase gets completed. The reason prophase is leptotene also true. Leptotene is suppose this is cell, this is nucleus. And this nucleus there is chromatin material. This is chromosome chassis. This is the form of a thread-like structure. We call it as chromatin material. So leptotene में क्या होता है? Leptotene में very thin होता है. And in leptotene the chromosomes are, let me write down here this. In leptotene chromosomes are thin and long. In leptotene the chromosomes are thin and long. तो उसके बाद इन क्रोमोसोम्स में कंडेंसेशन होती है. कंडेंसेशन इनमें कॉइलिंग स्पाइरलाइजेशन या we can say coiling of chromosome takes place.
तो ये साथ coiling at गैस, so it becomes thick and short in size. So it starts to become thick and short. क्रोमोसोम जो है जब ये मतलब सेल डिवीजन में दाखिल होता है तो फर्स्ट क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होती है, तो इसमें डायलेशन होती है, क्रोमोसोम ये कॉइलिंग इसमें होती है, तो ये थिक बनने जा रहा है और शार्प भी बनने जा रहा है। तो ये लेप्टोटीन है, इसमें क्रोमोसोम्स थिन आर लॉन्ग इन स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है, दे स्टार्ट दिस कॉइलिंग और वी कैन से दे स्टार्ट बिकम थिक एंड शॉर्ट इन साइज। तो उसके बाद आता है जाइगोटिक स्टेज। ये क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन दिस पैचटिन स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट का जो पैचटिन है इसमें क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उससे पहले क्या होता है, पहले में रहता है लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन। तो जाइगोटीन इसमें क्या है, इन जाइगोटीन द क्रोमोसोम्स और वी कैन से द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग। इन जाइगोटीन we can write here, in zygote homologous chromosomes start pairing. And if the homologous chromosomes are now they start forming pair. When pair are formed, that is called as bivalent. It is called as bivalent. Bi means two, and a pair a chromosome is there present, so it is called as bivalent. You also know that one chromosome has two chromatids, यानी एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, दिस वन एंड अनदर। जब बाइवेलेंट की बात हम करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन बाइवेलेंट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आर, क्रोमोसोम में कितने हैं, दो है, इसमें देयर आर टू क्रोमैटिड्स। जब दो क्रोमोसोम आएंगे तो बाइवेलेंट में कितने क्रोमैटिड्स होंगे, 1 2 3 and 4। सो इन बाइवेलेंट देयर आर 4 chromatids. In bivalent there are 4 chromatids. It is also called as tetrad. It is also called as tetrad. Tetrad means 4. So, if you object to it, the bivalent contains number of chromatids. They are 4 in number. So zygote is the chromosome they start pairing. When this is called as maternal pair, maternal set of chromosome. Another is called as, let me draw here, and this may be called as paternal set of chromosome. Go pairing in साथ गसन च अ pairing च बनन the pairing in साथ के chromosomes, the pairing is called as synapses. The different pairing of chromosome is called as synapse. There is a process during which chromosome start to pair, so it is called as synapses. वो इसमें zygote into after chromosome start to become thick and short. Second thing, they start to pair. The process called as synapses. When something pairs chromosome even side by side close to each other, so they come to pair. The pairing catches for example, here the variant chromosome. Suppose a chromosome is back, so it will pair either at on one point or at more than 2-3 points. So it depends upon the length of chromosome. When something pairing doesn't, this structure is called as synaptonymal complex. This structure is called as synaptonymal complex. Synaptonymal complex go in certain chromosome, and chromosomes they form pairing. Pairing takes place. So this structure whole contains 2 chromosomes, so homologous nature, so they start pairing. It is called as synaptonymal complex. So synaptonymal complex formation takes place also in zygote. First one में synapse chromosome starts to pair and they form synaptonymal complex. वो इस it takes place in zygote. उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की बात आती है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर takes place in पैचटीन। मेरा डायरेक्ट क्रॉसिंग ओवर takes place in पैचटीन। पैचटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। कोई साथ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है, नीट में भी ऑब्जेक्टिव आता है कि इन विच स्टेज और सबसेक्वेंट दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो द एक्यूरेट आंसर इज this patching stage. What happens during this crossing over?
So crossing what takes place, these are homologous chromosomes, but these chromatids are non-sister chromatids. So this may be called as non-sister chromatid, this may be called as non-sister. The crossing what is between this and those chromosomes which lay side by side, close to each other, crossing what is yet. Yeah, but again, crossing what is yet in crossover is now I can say this and this will not take place in crossover, but crossover takes place between these two chromosomes. So what happens here? Usually, new chromosome change, no change takes place. I mean, I am here chromosome 1. So this chromosome starts to cross over. This chromosome starts to cross over in this manner. ये क्रॉस ओवर करेगा यहाँ, तो यूजुअली यहाँ दिस विल आल्सो स्टार्ट टू क्रॉस ओवर, ये यहाँ से आएगा क्रॉस ओवर यहाँ करेगा, तो ये क्रोमोसोम इट विल रिमेन एज सच। जब क्रॉस ओवर ये करेंगे तो लेकिन क्रॉस ओवर के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, उनके बिना उनके बगैर क्रॉस ओवर नहीं हो सकता है। यू मे राइट for crossing over we need a number of enzymes. Number 1 is called as axonuclease. Number 2 endonuclease. Number 3 we also need this U protein. Then R protein. So these are the proteins or enzymes we can say. So these are needed during crossover. Nucleases, exonuclease, endonuclease, they U protein. They help to form a gap. Chromosome, when it crosses over this chromosome, here first breakage takes place. First point, breakage. And you will write down here. First point that breakage takes place. Breakage. So breakage here takes place. Number 1. Number 2, gap formation takes place. One is the same break segments. Second will, so there will be gap formation. So breakage or gap formation, we need exonucleases, we need endonucleases or U protein. So these 3 types of enzymes or proteins, they help to break the segments of chromosome and also form a gap. Here, it is gap sorry money. So then the gap should get filled. जो गैप यहाँ पर बनी है ये अब फिल होनी चाहिए, तो ये आर प्रोटीन यहाँ पे आता है, तो ये गैप को फिल करता है. दिस गैप गेट इज फिल, दिस गैप गेट इज फिल इन दिस मैनर. यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पहला क्रोमोसोम एज सच, दूसरा जो ये क्रोमेटिड यहीं पर रहा, लेकिन इसका क्रोमेटिड यहाँ पे आ गया, वो इंटरचेंज हुआ सेगमेंट. तो ये क्रोमेटिड इसका हाफ यहाँ रहा और हाफ क्रोमेटिड इसका यहाँ पे आ गया जस्ट में. तो ये क्रोमोसोम ऐसे ही रहेगा, दिस वन, ये रोज पर. सो ये जैसे चॉइस, ये गो इंटरचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो ये पॉइंट पे क्रॉस ओवर गसन, यानी ये पॉइंट क्रोमोसोम क्रॉस ओवर पर गैप फॉर्मेशन गई, रियूनियन गई या ब्रेकेज को अथ पॉइंट्स या दोनों अल्फाज शार्ट्स में द पॉइंट द पॉइंट वायर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, द पॉइंट वायर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस between two chromosomes, it is known as chiasma. ये पॉइंट जहां पे क्रॉस ओवर होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करेंगे, इस पॉइंट को हम chiasma कहेंगे. अगर एक पॉइंट पे ये क्रोमोसोम आ गए, उन्होंने एक पॉइंट पर क्रॉस ओवर किया, तो हम कहेंगे chiasma. अगर उन्होंने 2, 3, 4 पॉइंट्स पर क्रॉस ओवर किया, तो हम तब कहते हैं chiasmata. Single is called as chiasma. It is plural, and even 2, 3 more than 2 crossover takes place, it is called as chiasmata.
सो दिस पॉइंट ये भी नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव आ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी. द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर, द पॉइंट वर टू क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज chiasm. तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स अब सेपरेट हो गए तो क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ. हियर व्हाट हैपेंड, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू प्लेस. हम ये देख रहे हैं इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू प्लेस. तो वो वुचो क्रॉस ओवर इज गसन छु यम chiasm नंबर कोता हेक बनित कस हेक बनित, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी या chiasm फ्रीक्वेंसी ऑफ chiasm number of chiasm कत हेक बनित. Even the chiasm formation गसन छु, it depends upon various factors. In its crossover can it depends upon various factors. It's in crossover. The first is called as length of chromosomes. First point should length of chromosome. जितना मतलब क्रोमोसोम इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ही क्रॉसओवर भी हो सकते हैं, उतने भी chiasm फॉर्मेशन उसमें हो सकते हैं. तो सेकंड दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ क्रोमोसोम. सेकंड इज कॉल्ड एज, अगर याद होगा आपने जब हमने लिंकेज जब हमने पढ़ी लिंकेज जो डिटेल डिस्कस हमने की, तो उसमें मैंने बताया कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसका जो जीन्स होते हैं या सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर अगर दो जीन्स या मोर जीन्स अगर ये आसन प्रेजेंट बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और दे आर लिंक्ड linkage they are called as linked genes. तो ये linked genes they do not get separated during meiosis. form gametes या gamete formation जब होती है तो ये genes जो है which are present on the same chromosome but the distance between these two genes is very minimum, very low. So these genes do not get separated or segregated during gamete formation. So here crossing over chance is very low. We can say in those chromosomes where there is more linkage, so crossing over is very low. अगर इस क्रोमोसोम पे आप जीन्स देखें, they are very far away from each other. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज वो बहुत डिस्टेंस है इनके दरमियान, तो उस वक्त ये क्रोमोसोम क्रॉस ओवर कर सकते हैं. वो लिंकेज में क्रॉस ओवर चांस नो चांस ऑफ क्रॉस ओवर. बट अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होगी या पार्शियल लिंकेज होगी, यानी कि जीन्स के दरमियान अगर डिस्टेंस बहुत होगी तो उस वक्त क्रोमोसोम भी क्रॉस ओवर कर सकते हैं. तो सेकंड फैक्टर हम वी कैन राइट डाउन, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 2 फैक्टर डिस्टेंस between genes. The two genes are left, distance between two genes on the same chromosome. अगर मैं क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल अख क्रोमोसोम इस ब्याक यत ये सेपरेट गसन प्रॉब्लम कहीं, मतलब जब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द टू ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, here is one gene, so there is no difficulty, they can cross over easily. But what comes here, when genes are very much close to each other, then there is linkage, so there is no crossover. But partial linkage or this incomplete linkage, so there may be chance of crossover. So second factor I write distance between two genes on the same chromosome. So if the distance between two genes is more, it's like more the distance between genes, more the distance between genes, more will be crossover chance. And इनके दरमियान अगर डिस्टेंस बहुत होगी तो चांस ऑफ क्रॉसओवर भी बहुत बनता है. यहाँ पे क्रॉसओवर इजीली हो सकता है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ chiasm. तो अगर क्रोमोसोम एक जगह पर क्रॉसओवर कर सकते हैं, अगर क्रोमोसोम हम लिखेंगे एक जगह पर क्रॉसओवर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम यहाँ क्रॉसओवर किया तो एक chiasm बन जाएगा. अगर दो जगह पर हमने क्रॉसओवर किया तो दो chiasm बनेंगे. तो इट डिपेंड्स हाउ मेनी क्रॉसओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू क्रोमोसोम्स simultaneously there will be number of, so we can write down. So chiasm formation depends upon the number of crossover between
chromosomes. We are done it. Number of chiasma formation depends upon the crossover. Indicate which crossover is automatically there will be such number of chiasma formation. So let's count less the distance between two genes, less will be chiasma formation. And less the distance, less will be chiasma formation. So these are the factors chiasma formation depend on. Now types of crossover. Types of crossover. Types of crossover. अगर ये टाइप्स डिपेंड करते हैं क्रोमोसोम दरमियान के अगर क्रोमोसोम हम ले लेंगे एम के दरमियान कितने क्रॉसओवर हो जाएंगे. अगर सिंगल एक ही बार ये क्रॉसओवर हुए, फॉर एग्जांपल these are the chromosomes, they get crossover on one point, so this is called as single crossover. And if there is one crossover between the two chromosomes, homologous chromosomes, it is called as single crossover. अगर वहाँ पे दो क्रॉसओवर हुए दो पॉइंट्स में, so that is called as double crossover. Double crossover. Agar more than 2, 3, 4, 5 depends upon the length of it, so we can call as multiple crossover. Multiple crossover. So these are the types of crossover. And a single crossover, it may be double crossover, it may be multiple. Here one crossover, two crossover, more than two. Now last point is significance. Last point significance. Significance या importance of crossover. Crossover जब होता है हमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ interchange of genetic material takes place, so it will cause या it will result in formation of recombinants. तो लिखिए पढ़ें crossover results in the formation of recombinants. Number one. Number two, new traits or characters. New traits or characters are produced. Okay, so crossover कैसे recombinant is binding, how many characters are what, how many characters, so it will result in the formation of new traits are, so that will have variations takes place. So when variations takes place, so it may form new species or it may help in evolution. This may help in evolution. So this is the significance of crossover. In the recombinant, the formation takes place, new traits or characters are produced, variations are produced. So this was all about crossover. So I think this is section for today. Thank you.